Hello everyone. Uh, we'll start with the MCQ based discussions on Indian geography. So these are the as we know that Indian geography has much weightage or relevancy in civil service exams. So let us discuss and know the discussions in a wide approach. Let us go for the questions. First question is, where is the Loktak Lake situated? Okay. Where is the Loktak Lake situated? Choices are given as Kerala, Uttaranchal, Manipur and Rajasthan. Okay. Loktak Lake. Your answer here is your Manipur. Okay. Answer is your C. We'll discuss in detail for after every two questions. We'll discuss successively. Okay. Next, second question: which of the following water bodies? Which of the following water bodies separates Andaman from the Nicobar? Separate water bodies. Following water bodies separate Andaman from the Nicobar. It is 11-degree channel, Gulf of Mannar 10-degree channel and Andaman Sea. Okay. 11-degree Gulf of Mannar 10-degree channel and Andaman Sea. Okay. Water bodies separate Andamans from the Nicobar. If you see your answer is again C. It is 10-degree channel. We'll discuss then. Okay. Next. See, we'll discuss two questions. Okay, first, the Loktak Lake is in Manipur. It is known to be the largest freshwater lake. Okay, largest freshwater lake in Northeast India. Okay, largest freshwater lake in Northeast India. Also called the only floating lake in the world. Okay, largest freshwater lake in the world. Also called the only floating lake in the world due to the floating foam days. Okay. Largest freshwater. Freshwater means sweet water. The freshwater, also called the floating lake in the world. Okay, due to the foam days. Foam days means heterogeneous mass of vegetation, soil and organic matters at various stages of decomposition. That is the thing. Various masses of your vegetation, soil and organic matters. Okay. Right. Various level. So we can say it is located near the Moirang in Manipur state. Manipur state, Moirang one is one of the district. It is there, Moirang district. So actually, the etymology answer. What do you mean by the Loktak? Okay, let us know what do you mean by the Loktak. Loktak means, lok means stream, tak means then the end. Okay, here another important information, that is the Kebul Lamjau Lake, Kebul Lamjau National Park. Kebul Lamjau National Park. Okay, Kebul Lamjau National Park. So we can say Kebul Lamjau National Park, which is the last natural refuge of the endangered species. We can say Kebul Lamjau National Park, which is last endangered, Sangay or Manipur. Kebul Lamjau National Park is in Manipur. It is parikha pacharam tomorrow Loktak Lake ta kouthi, Khumdis Pond, Kebul Lamjau National Park. Kebul Lamjau National Park one endangered species achi, that is your endangered Sangay kaunti or Manipur bro antler deer. Antler deer भी तक कहा जाए.
one of the subspecies of Eld's deer. This is a subspecies. This is covering an area of 40 square kilometer. Is situated in the southeastern shores of this lake and is the largest of all fumdies in the lake. Okay, largest of all fumdies in the lake. The 10-degree channel is a channel. 10-degree channel is a channel that separates the Little Andaman and Car Nicobar. It separates the Little Andaman and Car Nicobar in the Bay of Bengal. Okay, the two sets of islands together form Indian Union Territory UT of Andaman and Nicobar Island. Okay, two sets of islands together formed Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. This channel is 150 km wide. Particularly, it is said that when the western trade winds was used by the Arabians, they passed through this channel in 15th century particularly. Okay. If I draw a map here, this is Andaman and Nicobar Island. So this is your Andaman. This group of islands. Here I am writing here. This group of islands is your Andamans. This is your North Andaman. Okay, North Andaman. This is middle. This is south. North, middle, south. This is little. Okay? So, these are the Nicobars. These are the Nicobar group of islands. These are the Nicobars. Okay. So, this is your 10-degree channel. This is your 10-degree channel. This one. Okay. Andaman and Nicobar Islands. Our Great Nicobar is the southern point of total Andaman Nicobar Islands. Just remember, in this way, that we have discussed kariki, then we'll definitely get to know many things. Okay. Next, next question go. Which of the following rivers has the largest river basin in India? Which of the following river has the largest river basin in India? Indus, Ganga, Brahmaputra, Krishna. Indus, Ganga, Brahmaputra or Krishna. Largest river basin किया अभी तक. Question ठीक से पढ़न्तु. It is the largest river basin in India. Indus, Ganga, Brahmaputra and Krishna. Indus, Ganga, Brahmaputra and Krishna. This answer is your Ganga. Okay, we'll discuss this one. Next, which among the following state or UT is located the Banihal Pass? Banihal Pass रखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम. Following state or UT is located the Banihal Pass. Banihal Pass की Banihal Pass को it is state or UT. It is answer which one? Sikkim, Uttarakhand, Himachal, Jammu Kashmir. Answer is your A. That is Jammu and Kashmir. Okay, हमें देखिए discussion में. Ganga जदि हमें देखिए बड़ा basin भितर the Ganga river basin is the largest one in India. The Ganga originates from Gangotri in the glaciers of Bhagirathi. The Ganga basin is a part of the Ganga basin
is a part of the Brahmaputra basin. Ganga basin is a part of the Ganges Brahmaputra basin, draining 10,86,000 square kilometer, 10,86,000 square kilometer in Tibet, Nepal, India and Bangladesh. Okay. To the north, the Himalayas or the lower parallel ranges beyond from the Ganges Brahmaputra divide. On the west, the Ganga basin borders the Indus basins and then the Aravalli Ridge. Ganga basin is a part of Ganga Brahmaputra basin. Draining 10,86,000 square kilometer, Tibet, Nepal, India and Bangladesh. To the Himalaya and the lower parallel ranges beyond the Ganga Brahmaputra divide. On the west, Ganga basin borders the Indus basin and then Aravalli Ridge. Then the north, the Himalayas lower parallels beyond the Ganga side. On the west, Ganga basin borders the Indus basin and the Aravalli Ridge. Kemti? This is Aravalli. This is Aravalli. This is Aravalli. This is Iju basin your Indus and Iju basin this is your Ganga. यहाँ माने कौन होची particularly Ganga basin जदि देखिबो Aravalli रो east को और Aravalli रो west को है Indus. तमे एटा गोटे है ना Aravalli is an junction point. Okay. जदि एक्चुअली जदि हम देखिबा बेसिन हिसाब रे ब्रह्मपुत्र टोटल ऊपर आसीबो इंडिया रे गंगा अधिक आसीबो है अच्छा नेक्स्ट देखिबा Banihaal Pass is a mountain pass across the Pir Panjal range. Banihaal Pass is a mountain pass across the Pir Panjal range at 2832 meter. 2832 meter re Banihaal Pass which is maximum elevations. This mountain range connects the Kashmir Valley in the Indian territory of Jammu and Kashmir to the outer Himalaya and the plains to the south. Banihaal Pass it is mountain across the Pir Panjal range. Pir Panjal range at 2832 meter, 2832 meter maximum elevation. This mountain range connects Kashmir Valley in the Indian UT of Jammu and Kashmir to the outer Himalaya and the plains to the south. Next, who among the following? The question takes on the who among the following was the first person? Okay, who among the following was the first person to scale Mount Everest without supplemental oxygen? Question matra poduchi. Anko bitaru who among the following was the first person to scale Mount Everest without supplemental oxygen? This is your Terence Bannon, Duncan Chazelle, Reinhold Messner, Jean Triolet. Who among the following anko bitaru? Okay, it is your we will discuss this one is your Reinhold Messner. Okay, first person to scale Mount Everest without oxygen. Okay,
नेक्स्ट देखिए, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो, कुड फ्लो कोनी चंबल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। आ भितर चंबल रिवर डज नॉट फ्लो, देखिए चंबल रिवर फ्लो करनी, दिस इज योर राजस्थान है, राजस्थान देखिए चंबल रिवर फ्लो करनी, विल डिस्कस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनॉल्ड मेजनर is a German, German basically is the first person to scale Mount Everest without supplemental oxygen, without oxygen में से रेनॉल्ड मेजनर चढ़ है। देन along with the Peter Hepler, संगर की थी Peter Hepler 1978 रे, he is also first climber to ascend to all 14 peaks over 8,000 meters above sea level including Mount Everest। ठीक है जी, पीटर हेबलर ऑल्सो 14 पिक्स 8,000 मीटर्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए, चंबल रिवर is a tributary of Yamuna river. Chambal river is a tributary of the Yamuna river, Chambal river, right? This river, the river flows northeast through Madhya Pradesh, running for a time through Rajasthan, right? Chambal river flow करछु कोथरे, is a tributary of Yamuna river, northeast को flow कला परे, then Madhya Pradesh रे flow करछु, then running for a time through Rajasthan, then it forming a boundary between Rajasthan and Madhya Pradesh before turning southeast, it join Yamuna in Uttar Pradesh। माने it is again if I draw a map here, this is Vindhya, Vindhya रा जब मैं कहले this is Vindhya mountain, Yamuna river इटे बाहरला परे, sorry, Chambal river somehow it is Vindhyara पूर्व प्रवाहला परे, it flows towards north or northeast, है ना, इटी मध्य प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश MP, then इटी राजस्थान रे पसिला ए बॉर्डर रे, then it southern Yamuna इटी ऊपर बहिचे, then southern make a southeastern to Yamuna side. This is Yamuna. Now this is the flow of Chambal. Chambal, देखिए Chambal is one of the, Chambal विषय जितने पढ़ी, it is the longest tributary of Yamuna, longest tributary of Yamuna, longest tributary of Yamuna। It is the longest tributary of Yamuna। नेक्स्ट देखिए, the Sirhind canal, ये देखो, Sirhind canal is located on which river? Sirhind canal particularly, Sirhind canal is located on which river? Sirhind canal, Satluj, Satluj, Ravi, Bias and Satluj, Ravi
है बियास एंड योर none of the above. कौन देखिए शेर हिंद कैनाल इट इज रिवर सतलुज ऊपर अच्छी है ना इट इज रिवर सतलुज ऊपर सॉरी इट इज रिवर सतलुज है ना शेर हिंद कैनाल विल डिस्कस ऑन दिस वन ए नेक्स्ट द चमेरा डैम is located in which state or UT? Chamera Dam. Chamera Dam, one of famous dam. It is located in Himachal Pradesh. आगे देखिए Chamera Dam विषय यदि मैं कहबी Chamera Dam is located near the town Dalhousie in the Chamba district of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh रा Chamba district पाखरे ही तमरो Chamera Dam अछि. Then we'll go for the जदि देखिए Chamera Dam Dalhousie Chamba ऊपर हम कहबी it impounds the river Ravi and supports the hydroelectricity project in the region है ना जदि हम देखिए Chamera Dam impounds करछि Ravi river को है ना support रे Ravi river and supports the hydroelectricity project in the region. The reservoir of the dam is on a Chamera lake. ठीक है चमेरा लेक गोटे फेमस लेक जोटा कि तुम्हारा अच्छी हिमाचल प्रदेश रे. The unique feature of the region is the fluctuating day and night temperature. Unique feature of the region is the fluctuating day and night temperature. The temperature during the day near dam rises up to 35 degrees Celsius and drops to a minimum 18 to 20 degrees centigrade at night. ठीक है जी. The temperature during the day near dam rises up to 35 degrees Celsius and drops to a minimum 35 degree Celsius to rise करे and it drops to 18 to 20 degree centigrade night time. The water level in the Chamera lake rises to maximum 763 meters while the minimum water level is 747 meters. ठीक है जी. यूनिक फीचर ए रीजन है फ्लक्चुएटिंग डे नाइट माने चमेरा जो प्लेस है फ्लक्चुएटिंग डे नाइट टेम्परेचर हुए है टेम्परेचर डे टाइम रे राइजेस करे 35 डिग्री सेल्सियस एंड है ना ड्रॉप्स करे टू ए मिनिमम 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है जी. वाटर लेवल चमेरा लेक रा मैक्सिमम करे 763 मीटर्स के ऊपर उठी जाए. ठीक है जी. एंड लेवल खसी जाए केते दैट इज योर मिनिमम 747 मीटर को खसी जाए. ठीक है जी. Sir Hind Canal is a large irrigation canal that carries water from the Satluj river in Punjab state. Sir Hind Canal is a large irrigation canal that carries water from the Satluj river in Punjab state. Satluj river it carries water. It is it is one of the oldest and biggest irrigation works. One of the oldest and biggest irrigation works in the Indus River system. One of the oldest and biggest irrigation works in the Indus River system and was inaugurated in 1882-80. 1882 मसीह इटा Sir Hind Canal. The canal begins at Ropar, Ropar headworks near Ropar city in Roopnagar district of Punjab. Sir Hind Canal
जदि मेनली यार बना है आफ्टर जदि देखियो कहबी सेरियम कैनाल लिखबी इट्स एन pre-independent canal, pre-independent canal, ठीक अच्छे pre-independence time canal. Pre-independence time canal, mainly built for irrigation purpose, mainly built for your irrigation purpose, है ना? Mainly built for the irrigation purpose, ठीक है, Syrian canal, and this mainly, it has been called this mainly enables the irrigation work at Punjab, Haryana, mainly sorry, it's mainly at the Punjab, Syrian canal, जो कि inaugurated था before pre-independence 1882, begins at the Ropar area. Okay, next question का मैं move करिबा. Which of the following river is known as Padma when enters Bangladesh? Which of the following rivers known as Padma when it enters Bangladesh? Brahmaputra, Ganga, Tista, Mahanadi. Brahmaputra, Ganga, Tista और Mahanadi. Padma किए जଣା पड़ची? It is Ganga. Then which of the following countries has, we'll discuss this one. Which of the following countries has world 25% thorium reserves? क्या मित्रों? India, China, US, Russia. या मित्रों किए 25% your thorium reserves basically. The answer is your our country, India. So we'll discuss which one. India, then कहबी प्रथम देखिए कि थोरियम रो कौन यूसेज है ना. थोरियम
थोरियम यूज करा जाए फॉर योर न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर और फॉर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर और फॉर पावर generation, nuclear reactor or for power generation particularly, है ना. India has the modest uranium reserves, particularly modest uranium reserves, whereas it is one of the largest thorium reserves in the world, है ना. World रे largest thorium reserves in the world. Thorium है ना, uranium reserve तो इंडिया रे कम अच्छी and one of the largest thorium reserves in the world. Thorium deposit, thorium despite its greater abundance in nature and a number of superior characteristics, thorium रे कौन अच्छी greater abundance in nature माने बहुत बहुल मात्रा एटा मिले and a number of superior characteristics, ठीक है जी. The fertile thorium है ना, fertile thorium 232 has to be converted into uranium 233 है ना. এটা ଗୋଟେ आइसोटोप रे कोन हुए थोरियम 232 को you're converted into uranium 233 है ना, first for use in a nuclear reactor use करिया पे. Deposits dominated in states, ए dominated states कोथरे को स्टेट रे हुए देखो एटी हला मेन थोरियम ता तमर कन्वर्ट होची यूरेनियम है ना. ता माने एटी हाउ रिच को जगह रे हमर माने इंडिया रो रिच रिजर्व्स ऑफ थोरियम झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है जी. सो एटा हम कहबो कि इट इज बेसिकली यार यूसेज हला हियर nuclear reactor for your power production basically, है ना. The Padma or Podda, Padma or the Podda is a major river in Bangladesh. Bangladesh is a major river and India, है. It is the main distributary of the Ganga, है. Particularly main distributary of the Ganga is flowing generally southeast of the 120, है. The it is one जिनसे कहबी जोटा कि पद्मा पोद्दा कहे बेंगली रे गंगार डिस्ट्रीब्यूटरी जदि हम देखिबो गंगार डिस्ट्रीब्यूटर रे which one following generally southeast of the 120 kilometers, that is 75 miles to the confluence of the Meghna river near the Bay of Bengal. The city, let me one diagram, that is how. See Ganga, if you see Ganga river, Ganga river stream आछि एठी हला बांग्लादेश हमर अछि बांग्लादेश ए पट्टा ठीक अछि गंगा जते बळे एंटर करूछि एठी ना गंगा स्ट्रीम रे गंगा जते एंटर करूछि कोडी बांग्लादेश दिस इज बांग्लादेश एठी या नाटा हे होछि दिस इज गंगा है एपटू ब्रह्मपुत्र बाहर के एठी बांग्लादेश रे एंटर करूछि तो एठी हम बनौछि गोटे डायग्राम रे पद्मा ब्रह्मपुत्र नाला जमुना एंड दिस इज योर मेघना ठीक है सो दिस इज गंगा दिस इज यमुना और पद्मा एटी अच्छी कोडी एज ए नुचेरा मेघना इन आठ हला तमरो
मेघना ठीक है गंगा एट है जमुना एंड दिस इज योर मेघना है ना मेघना तो जो देखो डायरेक्ट जो देखो गंगा हो कि ब्रह्मपुत्र हो दे आर नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज टू ब्रह्मपुत्र दे आर हैविंग डिफरेंट नेम ऑफ पद्मा एंड जमुना डिफरेंट नेम ऑफ पद्मा एंड जमुना जोटा कि बांग्लादेश रे एंड समात्र मिसी जंती से नेमटा हे अछि तारा मेघना है ना मेघना देन डिस्चार्ज इनटू डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट डिस्चार्ज इज The city Rajshahi is situated on the banks of the river. City Rajshahi is situated in the banks of the river, particularly. Rajshahi city river, Bangladesh. So this is all about जोटा कि मैं कहली your गंगा और ब्रह्मपुत्र पर है ना नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश का कैपिटल कौन बांग्लादेश का कैपिटल देखिए बांग्लादेश का कैपिटल इज योर ढाका है ना बांग्लादेश कैपिटल is your Dhaka. Every year Bangladesh floods आसछि floods आसिले we know the situations ठीक अछि बांग्लादेश कोन सिचुएशन था अभी हम देखु चंदी है maximum vulnerability of cyclones also. Next question. The Arid Force Research Institute is located at Arid Force Research Institute is located at Rajasthan, Haryana, Punjab और केरला है ना Arid Force Research Institute is located at Rajasthan, Haryana, Punjab ठीक अच्छे और केरला इट इज आंसर इज योर ए राजस्थान ठीक अच्छे नेक्स्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर किए या भीतर इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बायरासियल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर तनाकुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश केवल कारो प्रोजेक्ट इन बिहार bring out incorrectly matched pair. Okay. Here answer is your D for Delhi. It is your Koel Caro project is in Bihar, this one. Okay. Viral Seal project Himachal Pradesh, Solal project Jammu Kashmir, then your Tanpura project Uttar Pradesh. Here incorrectly matched, these are all are correct. Here it is only your Koel Caro project. We'll see this one discussions. Basically, Koel Caro project is in Jharkhand. Actually, it is not Bihar. Koel Caro project is in Jharkhand. Kimti? जब हम देखिए the South Koel, the South Koel देखिए South Koel runs across Jharkhand and Odisha states in India. It originates on Ranchi Plateau. Ranchi Plateau originates Sochi, and after then runs few miles east of Ranchi and conjoins the Belsingar and Singhom rivers. The Koel is fed by
3 streams in Jharkhand, है ना, 3टा stream in Jharkhand है, namely North Karo, South Karo and Koyna. North Karo, South Karo and Koyna. The South Koel enters Odisha and joins Sunk River at Bedabas. The South Koel enters Odisha and joins the Sunk River at Bedabas near Raurkela, from where it is named as Brahmani. Then we this is your Chota Nagpur Plateau, Chota Nagpur Plateau. आज देखिए देखियो साउथ कोयल रिवर जदि तुम देखुछ प्रथमे संक आउ कोयल ए दीटांक एडी मिसुचन. दिस इज एडी ए आउ बी नेबी है ना, छोटा अंक पैटर्न बी ए हला तमरो संक रिवर है आउ बी हला तमरो कोयल रिवर. एमन मिसुचन दे राउरकेला रे देन ब्राह्मणी एठी है ना, राउरकेला वेदव्यास पाखरे मिसुच देन इट इज ब्राह्मणी है ना. The South Koel enters Odisha and joins with Sunk River at Bedabas near Raurkela, from where it is named as Brahmani. It is misila pare so anka confluence ru tanga naata hochi, that is your Brahmani river. ठीक है. Then जो आईआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छी एटा वाला राजस्थान जोधपुर रे. दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टडी मेनली ऑन क्लाइमेटिक फेनोमेनन वेस्टर्न इंडिया है ना, क्लाइमेटिक फेनोमेनन वेस्टर्न इंडिया रे एंड कंट्री एज ए होल पर्टिकुलर है ना. ये जो आईआईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर रे है ना, एंड इट इज वेस्टर्न इंडिया एंड कंट्री एज ए होल. Next question देखिए. The water comes through, question important question. The water comes through Indira Gandhi Canal from the following rivers. Four river route waters है ना comes through Indira Gandhi Canal. Satluj and Bees, Satluj, Bees and Ravi, Satluj, Bees, Ravi and Chenab. Total of water comes to Indira Gandhi Canal from following rivers. The water comes from Indira Gandhi Canal from the following rivers go to Australia देखियो, that is mainly it is your Satluj and Bees river है ना, B for Bombay.
we'll discuss this one. Diagram करके मैं कही देबी केमती केमती आसुची. Next, which among the following state, question ठीक से सुनो, which among the following state in India has the highest production of large cardamom? है ना, cardamom माने अलैची. गुजराती हम जो बोलते सिक्किम, आसाम, गुजरात and Kerala. है ना, highest production of large cardamom. Answer is your A, Sikkim. Discuss देखिए. Large cardamom जो देखिए, large cardamom is cultivated in the sub-Himalayan region of northeastern India, Nepal and Bhutan. It is grown in cold humid condition. Cold humid condition में grown हुए under shade of trees. Cold humid condition रे इटा grown हुए cold humid condition रे under shade of trees at an altitude between 800 to 2000 meter above MSL. Above mean sea level ऊपर को. Shade of trees एतिकी. Large cardamom cold humid condition में basically cold और humid condition में सिक्किम रे रहा है. With an average precipitations केते रोची 3000 to 3500 mm. 3000 mm to 3500 mm rainfall. And it spreads of over about 200 days. And with temperature ranging from 6 to 30 degrees centigrade. 6 to 6 to 30 degrees centigrade नेकी ये तुम्हारा mainly रोज. सतलुज और बीज देखिए the इंदिरा गांधी कैनाल only originally जोड़ा कुआ जाए राजस्थान कैनाल. तापरे इंदिरा गांधी को ऑनर जवाब में सेटा को इंदिरा गांधी कैनाल को हाला. It is the longest canal India रे 650 किलोमीटर पकापकी 650 किलोमीटर है ना. पंजाब रो ए जगह स्टार्ट है. इससे पंजाब रो हरिकेरु से स्टार्ट है. 80 स्टार्ट है और फ्लो करছে राजस्थान रो गंगानगर पाखापाखि এই পর্যন্ত পড়ে আসছে है ना. It is the longest canal. It starts from Harike barrage at Harike, है ना. Harike is a place in Punjab. मतलब Harike is a place in Punjab. It start है a few kilometers below the confluence of Satluj and Beas river. The confluence of Satluj and Beas river, Satluj of Beas river in Indian state of Punjab, Indian state of Punjab, and terminates in irrigation facility in the third desert. एला तुम्हारा IG canal है ना. in the northwestern Rajasthan state. Northwestern Rajasthan रे इटा होची थर्ड डेजर्ट टर्मिनेट होची.
The total length are kete? This is near about 650 kilometer, है ना, 650 किलोमीटर पाखापाखि 650 किलोमीटर. Irrigation facility third desert रे only. थर्ड डेजर्ट रे मेनली देखो थर्ड डेजर्ट वाला फैसिलिटी है ना. नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान स्टेट. माने जदि तुम कह आम देखा इंदिरा गांधी कैनाल आमर स्टार्ट होता बिफोर माने सेकेंड 5 ईयर प्लान आमर स्टार्ट होता माने बिफोर सेठू नहीं इंडिपेंडेंस पर तार काम आरंभ ना. एंड इट टुक्स नियर अबाउट 40 years फॉर कंप्लीशन है ना. कंप्लीशन पे नियर अबाउट 40 years लगला इंदिरा गांधी कैनाल टाकू सरिया पे. ठीक अच्छे. Took 40 years to complete the Indira Gandhi Canal. It took. Next देखिए which of the following northeastern states question हम पढ़ो चाहते हैं. Which of the following northeastern states Kopoli hydro project is located. Kopoli. Kopoli hydro project, Arunachal Pradesh, Assam, Tripura, Nagaland. Kodi Arunachal Pradesh, Assam, Tripura and Nagaland. ठीक है जी. Kopoli hydropower project it is located in your Assam. ठीक है जी. Then हमें डिस्कस करिए which among the following is a typical monsoonal vegetation in India. अभी तक ये typical monsoonal vegetation: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, subtropical evergreen forest. Answer देखिए it is tropical deciduous forest. B for Bombay. Tropical deciduous forest. B for Bombay. फिर हम डिस्कस करिए. वर्तमान देखिए फर्स्ट कपोली ऊपर कपोली रिवर ऊपर कौन अच्छे है ना. कपोली रिवर नेम्ड आफ्टर है ना जने शेष थे कपिला इज एन इंटरस्टेट रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना. कपिला जने मुद्दी थे इन इंडिया दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड असम है ना. मेघालय एंड असम एंड इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है ना. ये है कपोली रिवर है ब्रह्मपुत्र गोटे लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी जोटा कि फ्लो करछि हमर आसाम रे पर्टिकुलर.
then the Kopili originates in the Meghalaya plateau. Meghalaya plateau to Kopili originates and flows through central Assam. Meghalaya plateau bahari ke Assam re flow korchi and the hill districts of Assam particularly before its confluence with the Brahmaputra. Kopili कोड बाहर ची Kopili जब देखो जो Kopili originates korchi Meghalaya plateau. Just 1 second. Kopili originate korchi Meghalaya plateau है flows through the central Assam and the hill districts of Assam particularly है ना Assam रो hill district रे भी से flow korchi ठीक है जी Kopili it is a confluence district of Assam before it confluence with the Brahmaputra है ना मेघालय रो बाहरी की तमने Kopili originally flow करची मेघालय रो बाहरी ची then central Assam देखी hilly district देखी before the confluence with the Brahmaputra. In Assam it drains the district of कोटी drains करची Karbi Anglong रे and Dima Hasao इधर ये सब बड़े फ्लोड है कार्बी आंगलॉन्ग दिमा हसाव कामरूप एंड नौगांव है ना कार्बी आंगलॉन्ग दिमा हसाव कामरूप एंड नगांव. The river flows for a total length of 290 kilometers. Flows for a length of 290 kilometers particularly 290 kilometers flows korchi and has a catchment area of 16,420 square kilometers. It is noted for several spectacular waterfalls along its course, which has several deep gorges and rapids. ठीक है कार्बी आंगलॉन्ग या एगुड़ा सब जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ा एगुड़ा भी जदि क्वेश्चन आसो कार्बी आंगलॉन्ग दिमा हसाव कामरूप नागांव सब आसाम प्रबल मैक्सिमम रेनफॉल है ये जगह हुए नॉर्थ ईस्ट रे. आसाम इज ए स्टेट सब बेले ए बारिश हुए माने रेनफॉल इज वेरी माने प्लेंटिली मींस प्लेंटिली है फॉलोड देयर. एटी देखिबा नेक्स्ट देन इंडिया जी हमें नेक्स्ट देखिबा who type of vegetation India रे dominate करे, that is your monsoon vegetation. It is particularly your monsoon vegetation.
है monsoon vegetation ठीक अच्छे monsoon vegetation कौन पे जदि इंडिया रो हमें देखिबा particularly India has monsoonal climate, particularly monsoonal climate India रे mainly monsoonal climate कौन हमरो गोटे हला साउथ वेस्ट monsoon आउट हला नॉर्थ ईस्ट monsoon दिटा इंडिया रे monsoonal climate अछि साउथ वेस्ट आउ नॉर्थ ईस्ट monsoon मेन तो vegetation भी और डिपेंड्स ऑन योर monsoon that is okay. Next, the largest brackish water lagoon of Asia is located in which of the following state? Discuss largest brackish water lagoon कोटी रोची इंडिया रा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा है आमर एटा डी ओडिशा रे है इट इज नन अदर देन चिलिका ठीक अच्छे. नेक्स्ट देखिए consider the following consider the following clover, sugar cane, alfalfa. Now which among the above are your plantation crops? Plantation crops किए clover, sugar cane और alfalfa. 1 and 2, 2 and 3, only 2 and 1, 2, 3. This is 1, 2, 3. D. A plantation is a large farm. Plantation is a large farm or estate, usually in a tropical or subtropical country. है Plantation is a large farm or estate, usually in a tropical or subtropical country, where plantation crops large farm or estate, tropical, subtropical country, where the crops that are consumed for food are grown for the sale in distant market way, rather than for the local consumption. Basically जो plantation crop माने हम एटा बुझिबा से माने particularly they are exported for your profit rather than your consumption. Such crops include such crops include your cotton, coffee, tobacco, sugarcane, sisal and various oil seeds and rubber trees. ठीक है जी. Farms that produce alfalfa, lespedez, clover and other है ना forest crops are usually not called plantation. से माने plantation कहा जाएनी. ठीक है जी. The term plantation has usually not included in large orchards, but has included the planting of trees for lumber. है ना planting of trees for lumber. A plantation is always a monoculture over a large area, does not include extensive naturally occurring stands of plants that have economic value particularly. है ना ठीक है.
प्लांटेशन क्रॉप्स रे जो आम देखिले कि अल्फा अल्फा लेपर्स क्लोवर एंड अदर फॉरेस्ट क्रॉप्स नेक्स्ट आम देखा यहाँ इम्पोर्टेंट दैट इज चिल्का उपरे मु कहबी चिल्का इज एन ब्रैकिश वाटर लेगून ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट कोस्टल इंडिया व्हिच चिल्का उपरे जदि मु कहबी ब्रैकिश वाटर लेगून कहुए चिल्का को इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया केमती कहीं लेगून कहुचे लेगून माने ठीक अच्छे 3 साइड लैंड मास एंड 1 साइड connected to water body ठीक अच्छे जमती ये मुझे डायग्राम रे ये जो जगह नेली दैट इज केमती ये इंडिया रे जो सेक्शन मु काटिली ये लैंड मास आमर ओडिशा रा अब ये जो जगह तुम कनेक्टेड इज दैट इज बे ऑफ बंगाल है ना ठीक अच्छे लार्जेस्ट लेगून बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट है लैंड मास एंड इट इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल राइट बे ऑफ बंगाल रे कनेक्ट है नेक्स्ट आम देखा कौन इट इज होम टू चिल्का इज द लार्जेस्ट इट इज होम टू चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेगून एशिया सब बड़ लेक है लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स है ना ये चिल्का को कौन होती माइग्रेटरी बर्ड्स माने आसंती बहुत दूर दूर है ना दैट सपोर्ट्स ए यूनिक लाइफ ऑफ मेरीन ब्रैकिस एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज है ना मेरीन ब्रैकिस एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज को भी चिल्का को भी आसंती है ना बहुत लॉन्ग माने फ्रॉम long distances they came to Chilka. Migratory, that means long distances mean they will come from your Siberia, Kutkudasan, Siberia, Ladakh, Siberia, Ladakh, your Siberia means Russia part, then Kazakhstan, है ना सेपट आसंती कहीं ना warm area को आसंती for your hatching, है ना अंडा देवा पे आसंती नेक्स्ट देखिए India has been providing assistance. India has been providing assistance to which among the following neighbors for strengthening and extension of embankments? Right? Assistance to which among the following neighbors for strengthening and extension of embankments along Lal Bakeya, Bagmati and Kamla rivers. Lal Bakeya, Bagmati and Kamla rivers. के बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान है ना कि आश्चर्य भितर योर आंसर इज योर बी इट इज नेपाल है ना ठीक अच्छे it is Nepal.
which among the following spreads from है ना अभी तो विल डिस्कस एटा भी which among the following that spreads from Sasaram and Rohtas in western Bihar to Chittorgarh in Rajasthan क्या भितर Sasaram and Rohtas in West Bengal to Chittorgarh in Rajasthan है ना in western Bihar रू नहीं राजस्थान देखिए अरावली विंध्या धारावाड़ कडप्पा कडप्पा तो साउथ इंडिया रे केबे हबनी धारावाड़ कर्नाटक रे हबनी अरावली राजस्थान रे हबनी बिहार इट इज आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे दैट इज विंध्या सिस्टम विल डिस्कस देखिए कौन ए डिस्कस करिबा एठी मु कहबी कि विंध्या सिस्टम स्ट्रेचेस जोरा कि स्ट्रेचेस करची सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार रू नै कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर्यंत से जाउची जेमती फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ हियर विंध्यास एरा एक्सटेंशन का एमती रही विंध्यास दिस इज विंध्यास चित्तौड़गढ़ दिस इज विंध्या विंध्या है ना कोड जाउछ एटा चित्तौड़गढ़ है ना सासाराम रू नहीं चित्तौड़गढ़ पर्यंत ए जगह these rocks came into existence after Kadapa rocks है ना these are sedimentary rocks which are built from sandstone shale and limestone है ना sandstone shale and limestone सैंडस्टोन सेल आउ लाइमस्टोन है विंध्या सिस्टम मेड होची सैंडस्टोन सेल आउ लाइमस्टोन एटा मन रखिबे है आउ सासाराम जोटा खेला तमर आपनकर बिहार रे आउ एटा ना राजस्थान रे अप टू टिल माने सपोज दैट्स एन वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विंध्या रे जदी लेंथ देखिबो इट इज नियर अबाउट 1100 किलोमीटर विंध्या रे लेंथ है ना अच्छा ता पूर्व क्वेश्चन देखिए कौन थिला योर लाल बकेया बागमती एंड कमला रिवर्स हैला ए माने लाल बकेया बागमती एंड कमला रिवर्स ए माने करो फॉलोइंग रिवर्स फॉर स्ट्रेंथन द एक्सटेंशन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हैला इंडिया रे कमला रिवर्स जदी देखिबो सॉरी हैला ए माने जो इंडिया संगे जो करचंदी हैला असिस्टेंस टू फॉलोइंग रिवर्स अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन ऑफ एम्बैंकमेंट्स जो एम्बैंकमेंट्स बढ़िया पे लाल बकेया बागमती एंड नेपाल को जब तुम देखियो एठी जदी डायग्राम टा करछ नेपाल ना नेपाल रो दिस इज नेपाल रो 8% दिस इज नेपाल रो ए जो सेंटर दिस इज योर बागमती कमला हैला ठीक अछि बागमती कमला और लाल बकेया ठीक अछि बागमती this is Kamla and Lal Baqeya माने okay maximum माने फ्लो करचंती योर नेपाल रे फ्लो कला परे माने आसिकी गंगा रे मिसुचन समाने ठीक अछि गंगा रे ट्राइब्यूटरी एक मसचन जेंति कमला बागमती है से मन का एम्बैंकमेंट एक्सटेंशन कर होछ सो दैट India they could go out, get financial they could get assistance from Himalaya your Nepal also get assistance from the Nepal also है they could get assistance from the Nepal also ठीक अछि
Next, we'll discuss next question following. It will consider the following ultra mega power projects and the respective states. Kiye ultra mega power projects and respective states. Kiye your Talaiya, Odisha, Sasan, Madhya Pradesh, and Vedavahal in Jharkhand. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स कोटी कोटी देखिए तलैया ओडिशा सासान मध्य प्रदेश बेड़ाबहाल है झारखंड है ना या भीतर जदी ओनली करेक्ट देखिबा इट इज करेक्ट इज योर है ना तलैया ओडिशा रे नो सासान मध्य प्रदेश करेक्ट बेड़ाबहाल इन झारखंड दैट इज आल्सो रॉन्ग आंसर इज योर ओनली टू करेक्ट है ना सासान मध्य प्रदेश ना दैट इज ओनली करेक्ट और तो देखिबा आंसर इज बी है ये देखिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जब मैं कहबी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट दैट इज UMPPS आर द वेरी लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली जोटा कि 4000 मेगावाट है ना कैपेसिटी 4000 मेगावाट कैपेसिटी है ना तलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जोटा अछि तलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ना इन झारखंड पर्टिकुलरली जोटा कि रिसेंटली जोटा कि न्यूज रे थिला was abandoned by the original owner Reliance Power of original owner नेला and is likely to be auctioned afresh. Vedabahal ultra power project is in near Sundargarh district रे Vedabahal ना ओडिसा रे so इठो मन रखबे Vedabahal जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सेटा अछि सुंदरगढ़ रे माने ओडिसा रे और तलैया जोटा अछि इन झारखंड रे है ना गोटेला झारखंड रे आ गोटेला ओडिसा रे नेक्स्ट देखिबा which of the following geographical term related with a body of land surrounded by water on three sides है ना एडी करो body of land है ना जोटा कि सराउंडेड बाय वाटर ऑफ थ्री साइड्स माने गोटे लैंड थी और ताकू थ्री साइड रु वाटर एमती गरिकी थी पानी वाटर है ना पेनिनसुला गल्फ स्ट्रेट आइलैंड हियर आंसर इज योर ए पेनिनसुला ठीक अच्छे विल डिस्कस ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए which of the following geographical term related with a naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two large bodies of water है दीटा two large bodies of water का की कनेक्ट करछि है ना naturally formed narrow typically navigable waterway connects two large bodies that is your strait C देखिए वर्तमान आंसर है ना एटी आंसर का डिस्कस करिबा ला स्ट्रेट गोटे चैनल जेमति हम कहबी फॉर एग्जांपल है ना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जेमति कहली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखो गोटे नैरो चैनल आंसर कोन देला नैरो चैनल एटी naturally formed narrow typically navigable waterway or that connects two larger bodies water bodies जदि हम एटी देखिबा है ना ए जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ए जो जगह हम कहली जिब्राल्टर स्ट्रेट एटा कनेक्ट करछि कहा को एटी मेडिटेरेनियन सी है ना मेडिटेरेनियन सी आउ एटा हला अटलांटिक
ओशियन ये दुटा कनेक्ट करछि बेस्ट एग्जांपल हला एटा देन मलाक्का स्ट्रेट जदि हम देखिबे इन इंडिया मलाक्का स्ट्रेट इंडिया रो इन इंडिया माने मलाक्का स्ट्रेट हमर कनेक्ट करछि कोठी इंडिया रो जदि हम देखिबे इंडियन ओशियन को कनेक्ट करछि साउथ चाइना सी संगरे हला और माने सॉरी पर्टिकुलर जदि हम कहबी इट इज बे ऑफ बंगाल मलाक्का स्ट्रेट कनेक्ट करछि योर बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी हला साउथ चाइना सी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन स्पेन और यूरोप मोरक्को एटा हला मोरक्को सॉरी जदि हम एटा कहबी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जदि आफ्रिकार जदि मैं कहबी दिस इज आफ्रिकार पर्टिकुलरली मोरक्को आउ इटा हला स्पेन ठीक अछि जिब्राल्टर अच्छा सेमती हमर इंडिया आउ गोटे अछि दैट इज योर पाक स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट भी अच्छी हमर पाक स्ट्रेट जोटा कनेक्ट होची गोटा को पाक स्ट्रेट जदि मु कहबी दिस इज कनेक्टिंग है पाक स्ट्रेट दिस वन पाक स्ट्रेट कनेक्ट करची बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी कनेक्ट करची पाक स्ट्रेट भी Peninsula based example of India also called the Indian Peninsula like that is Sinai Peninsula Indian Peninsula माने हम जदि एपट देखिबा एटा हमर इंडियन लैंड मास इंडिया एपट हला बे ऑफ बंगाल एपट हला अरेबियन सी और एपट हला इंडियन ओशियन ठीक अछि लास्ट टू क्वेश्चंस वर्तमान डिस्कस करिवा दैट इज वेयर इज मयूरकाशी प्रोजेक्ट को जगह रे मयूरकाशी प्रोजेक्ट अछि that is Jammu Kashmir Punjab और Jammu Kashmir Punjab West Bengal and Maharashtra it is your C ठीक है Jammu Kashmir Punjab West Bengal और Maharashtra आंसर इज योर जदि हम देखियो मयूरकाशी प्रोजेक्ट इज इट इज योर C West Bengal में मयूरकाशी प्रोजेक्ट अछि नेक्स्ट देखिए which of the following is not matched correctly उकाई प्रोजेक्ट रिवर तापी लास्ट क्वेश्चन तापर डिस्कस करियो अभी है मयूरकाशी प्रोजेक्ट सॉरी उकाई प्रोजेक्ट रिवर तापी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट रिवर नर्मदा फरक्का प्रोजेक्ट यमुना सलाल प्रोजेक्ट रिवर चेन्नाब या भितरु जदि हम देखिबा योर करेक्ट आंसर इट इज योर माने नॉट करेक्टली मैच्ड है ना ये करेक्ट उकाई प्रोजेक्ट तापी ऊपर अछि सरदार सरोवर जदि हम कहबे रिवर नर्मदा ऊपर दिस इज आल्सो करेक्ट है ना फरक्का यमुना ऊपर नाही इट इज गंगा है ना सो नॉट करेक्ट सलाल प्रोजेक्ट रिवर चेन्नाब दैट इज आल्सो करेक्ट है ना सो आंसर इज योर सी है ना यमुना ऊपर नाही गंगा ऊपर देखिबा डिस्कस करिबा फरक्का बैरेज जदि हम कहबी फरक्का बैरेज is a barrage across the Ganga river located in Murshidabad district है ना Murshidabad district West Bengal रे फरक्का बैरेज अछि जोटा कि roughly 18 kilometer generally which is roughly 18 kilometer from the है ना border of Bangladesh रे फरक्का बैरेज जोटा कि फरक्का बैरेज हमरो गवर्नमेंट जतले हमरो 5 year plan second 5 year plan में फरक्का बैरेज हमरो करा हैतले बना हैतले फरक्का बैरेज को ई करिया पे फॉर मेनली इरिगेशन पर्पस में मेनली कराइतला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी कराइतला फरक्का बैरेज को फरक्का बैरेज टाउनशिप इज लोकेटेड इन फरक्का कम्युनिटी इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जोटा कि वेस्ट बंगाल है ना कंस्ट्रक्शन जोटा कि स्टार्टेड हितला हमरो पाखापाखि 1961 ठीक अछि एंड जोटा कंप्लीटेड हितला हमरो 75 रे 1975 मसिया रे जोटा कि कॉस्ट हला नियर अबाउट 1 सही समय कॉस्ट हला दैट इज 157 करोड़ अराउंड बैरेज रो लेंथ जदि देखिबो इट इज नियर अबाउट 2304 मीटर हला 2304 मीटर बेसिकली अच्छा बर्तमान एटा देखिबा मयूरकाशी रिवर प्रोजेक्ट जदि देखिबो इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली रिवर है ना हुगली रिवर दैट राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना जे कि राइज करछि तमरो
छोटा नागपुर प्लाट्यू हुगली रिवर छोटा नागपुर प्लाट्यू जो बनई छोटा नागपुर प्लाट्यू ये हुगली रिवर ये बाहर है मयूरकाशी रिवर जोटा कि हुगली गोटे ट्राब्यूटरी मन रख मयूरकाशी हुगली ट्राब्यूटरी आ हुगली जोटा है मिसी हुगली है गोटे डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा जो आसी पशिची है आलुवियल सॉइल डिपोजिट होती है हुगली है डिस्ट्रीब्यूटरी गंगार छोटा इट फ्लोज थ्रू द बिहार एंड वेस्ट बेंगल बिहार वेस्ट बेंगल मयूरकाशी रिवर फ्लो करची है एटा जदि कहबा इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बेंगल गोटे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बेंगल कि मयूरकाशी मेनली है बना होता तार वेरियस पर्पज टू क्रिएट इरिगेशन पोटेंशियल इरिगेशन करा देन टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर माने HEP हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर आउ कंट्रोल्स द फ्लड्स एंड एरोजन जो होचे रिवर रो ताकू भी कंट्रोल करिया पई तमरो मयूरकाशी रिवर जो प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट मेनली सेटा आखि रखी के एटा बनेथला मयूरकाशी प्रोजेक्ट ठीक अछि मयूरकाशी प्रोजेक्ट बनिवा परे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी प्लान्स फॉर दैट है ना बहुत सारा प्लान्स करता जोटा कि पर्टिकुलरली वेस्ट बेंगल रे मेन थिला तमरो से समय फ्लड्स कंट्रोल करिया पई ठीक अछि फ्लड्स कंट्रोल करिया पई आ एरोजन ना एरोजन भी कंट्रोल करिया पई मयूरकाशी प्रोजेक्ट करतला आ ए जो प्रोजेक्ट बनिला मयूरकाशी प्रोजेक्ट रे नॉट ओनली योर वेस्ट बेंगल also the particularly not only West Bengal also Bihar and Jharkhand states get benefited Bihar और झारखंड भी से माने बेनिफिट है केवल वेस्ट बेंगल नो बिहार और झारखंड भी बेनिफिट है सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे है ना नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू